Good morning, student. Today I have to start the chapter 3, Fiber to Fabric. In the previous class, we have finished the second chapter, Nutrition in Animal. Now let's start the chapter number 3, part 1, Fiber to Fabric. Fiber to Fabric. Part 1. So first of all, we will discuss about fiber. ये जो show करता है fiber to fabric. This is a journey of the formation of a fabric from the fiber. So first of all, let us we know what is fiber. As we know, fiber is a fiber. Fiber is a thin thread like structure extracted from an organism or made in the industries. फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतला धागे की तरह, जो पतला भी होता है, थिन एंड स्ट्रॉन्ग भी उसको हम लोग कह सकते हैं, विच इज एक्सट्रैक्टेड, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पाते हैं ऑर्गेनिज्म से. वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, बिकॉज बोथ आर हैविंग कैपेबल टू प्रोड्यूस द फाइबर्स क्रॉप भी होते हैं, एनिमल से भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है. बट इट इज ऑल्सो मेड इन द इंडस्ट्रीज, TRIES, made in the industries by the use of many different chemical substances. So that on the basis of the production of the fibers, that is classified into two parts. फाइबर को दो भाग में बांटा गया है. The fiber is further classified into two parts. That is, first is natural, natural, natural fiber, and second is artificial fiber. In this chapter, in this class, in this chapter, we have to study about the natural fiber. ये natural fiber के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे. This artificial fiber we don't have to study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ना है. तो नेचुरल फाइबर दो तरह के हैं. एक तो हो गया प्लांट प्रोडक्ट, दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट और फाइबर ठीक है. सो एग्जाम्पल में आपका प्लांट में एग्जाम्पल में आ जाएगा. द एग्जाम्पल इज जूट, सेकेंड कॉटन. एनिमल फाइबर में एग्जाम्पल में होगा सिप, याक, etc. So these two type of organism which is producing the natural fiber. So we will know about the process. इस चैप्टर में हम लोग को नेचुरल प्रोसेस जो एक जर्नी है फाइबर से फैब्रिक बनने का, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल प्रोसेस. So now we will go through the animal fiber. The first of all I'll start the wool. सबसे पहले हम लोग wool को पढ़ेंगे. यहाँ पे as we know wool is
द एनिमल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम लोग एनिमल प्रोडक्ट। ये एनिमल प्रोडक्ट है। ऐसा एग्जांपल मैंने पहले ही बताया है आपको। इसका हो गया सिप, SHEEP, सिप हो गया, goat, yak and etc. These are the example of the animal, those who produce wool. Understand? So here first of all we will see the wool first. That as we know, wool is extracted from an animal. Suppose say we are cutting the hair, हम लोग cutting the hair, हम लोग बाल को काटते हैं। This is the process of extraction of the wool by which we are making it the fiber. हम लोग fiber बनाते हैं, cloths बनाते हैं further by the different processes. So that process of cutting of hair or the removal of the upper layer of the skin of the sip, that is called fleece. उसको हम लोग बोलते हैं fleece, FLEECE, fleece. Fleece is the part of the upper layer of the skin of the sip which is extracted from the animal to remove the hair from their body, or that is also the process of trimming is used by the help of trimmer machines to cut the hair by which it is extracted. उसके बाद उसको extract करते हैं, collect करते हैं. Understand? So there in that collection of the hairs of an animal or shape, there is so many qualities it is found in the same body. As some are having wrinkles, some are straight, some are having white color, having different colors and textures. तो ये जो हम लोग collect करते हैं, we are doing the different processes. First of all, before it, we will discuss what are the different varieties of wool that we are getting from the different types of एनिमल। ये हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि कितने तरह के ऊल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कितने तरह के जानवर, कौन कौन नाम क्या है, ये हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। So I have written here the list of the different products, where it's produced, in which state, and what are the names of that varieties of the wool that I have mentioned here. 4 types I have written, और भी होता है 6-7, but 4 only I have written, that you will mention in the copy and you will remember it also. लोही, that is help to make carpet, इससे हम लोग carpet बनाने का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा पंजाब स्टेट में ये ऊल का वैरायटी पाया जाता है। दूसरा है नाली, that is also used to make carpet, पंजाब एंड राजस्थान, है ना। बखारवाली, वुलन शॉल इससे बनाते हैं, शॉल जो हम लोग यूज करते हैं ठंडे के मौसम में, दैट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड मारवाड़ी कारपेट्स, दैट इज इन गुजरात। ऐसे और भी है, if you can write then there is no any problem, but I have mentioned 4 here. So these are the different varieties of wool that is used to make different products, and in different state it is produced. These varieties are found, the varieties of sheep, or if we can say the varieties of wool that it is manufactured in the different states. Now today is this is the last part of this class. I am going to end this class by giving this list of the different products name and state. In the next class I will discuss about those varieties of the sheep or the goat or the yak, camel, which is developed by the scientists by the process of cross hybridization, which is providing us a very good variety of wool to us, which is used by the people to make the fabric from the fibers. So don't forget to subscribe my channel and like it also, and also if you will face any type of problem, then you can go to the that is comment box. That's all. Thank you.